Yes, या audience, फिर you can react on chat. Yes. किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना पिछला सीजन का लास्ट एपिसोड देख के कि ये भी स्कैम ही होने वाला है फिर से? हो सकता है स्कैम। हो सकता है, मे बी। स्कैम में ओरिजिनल स्कैमर भी शामिल था, है ना, लास्ट सीजन में। Oh. Yes, guys, we जस्ट are दो starting मिनट in में। 2 minutes. हाँ, We are waiting for the crowd, guys. Till now, tell me, what do you know about database? Anyone has any idea what is database is? Or what you are expecting in this session? Yes, guys, be interactive. Collection of information, so I'm saying. Base of data is database. Oh, nice one, Imanshu. This is the place where we to a new series of the podcast. Here we are back again with our new podcast, the FOSS Files Season 2. So, what? Firstly, tell me how many of you have attended the Season 1 of the FOSS Files? Yes, you can comment in the chat, guys. Oh, so am I attended. Yes, yes, nice. Yes, Patil. Plus, nice, 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 nice. So, can you tell me what is the session name of Season 1? What is the name of Season 1? Anyone, guys? Be quick. Oh, who are the new joining? Who are the language labs of the set? Nice. So, can you tell me how many episodes are there in the season one? How many of you have attended, guys? Any of the season of FOSS Files? Yes, Siddharth is new. Ryan is new. Master Bit is new too. Nice, guys. You will learn lots of new things today in a podcast. New season, new people. Yes. So many news joining are here. I think it is the influence of Linux Diary 4.0. So let's. I will give you a short overview of the what is happening in the podcast. So, firstly, what is FOSS File? So, FOSS File is a podcast conducted by Vulcan Linux Users Club to discuss about free and open source software, where we interact with the audience, we discuss the various agenda of the particular topic, and we relate the many open source topics together and discuss about it. So, here we are with our presenters today. So, first is Tushar Rathod, aka Alto. Are you here, Kalto? And second is Aradhya Pitalwar. And third, our special speaker for today's session is Siddesh Kitkaru. So, guys, it is our session two, which is called as Database Chronicles. It is our season two. And here we are with the episode one, which is Decoding the Databases. So, guys, what is database? Can anyone know what is meant by database? Anyone know? Anyone has any idea? Linux Diary Rocks. Yes, guys. So in the stage we have with us Tushar, Siddesh, and Aratya.
So, hand over to you guys. Let's start the session. Yeah, so let's start the session. So let's start by answering the first question. What is database? So please share your comments in the comment box. What do you think is a database? Okay, set of data. Yeah, we will be sharing a screen. Tushar, if you can share the screen. Yeah, I'm sharing. Yeah. Okay, a place where all the data is stored. Okay. Managing the data. Collection of organized data. Okay. Um, First of all, what is data? yeah, that's also a good question. Data should be virtual or should be hard. Raw facts. Okay. Oh, sorry to interrupt you guys. Siddesh, first tell me the agenda of the episode, guys. Let's start with Okay. what is the agenda we are going to cover. So basically, today's agenda is we are as the episode name suggests, we are going to decode the database. So for something to decode, we should first understand it, right? How it is encoded. So basically, we are going to learn from a scratch, like where what is like just the Aradhya asked, what is data, how it is stored, where it is stored, what are the different types of systems where it can be stored. Then we will move on to databases, types, and everything. So Okay, so today is basically, just an scratch, yeah, we are going to start the database learning today. yeah, Yes, Siddesh? yeah. So Okay, today we let's will start only now. focus on understanding. Yeah. Okay. So is volume fine or Yeah, it's fine. yeah? Okay. So I think screen is also visible to everyone. So can anyone tell me just difference between data and information? I think it would be easier rather than explaining what is data. Okay, info is Is raw. what? Mhm. How they Okay, so data is meaningful information. Okay. Okay, so data is something which makes sense. Of course, that is information. Okay, so that is almost right. So that data is something which makes some information, or rather, data can be a raw, which can be transformed into useful information as per the user or as per the need. Okay, yeah. So processed information is data basically. Okay, I see. So Tushar, should So, we I got a start? question, What? Siddesh. I got a question Yes. that does Yeah. information make sense or data makes sense? I think in uh, visual presentation of data makes sense rather than just the data. Like Yeah, that's data, right. if we convert the data, yeah. So I guess I'm just asking this question because I wanted to correct that Tanmay. He said that processed information is data, but actually Okay. it is processed data is Yeah, vice information. versa. Yeah. Yeah, sorry. Yes, Siddesh, you Okay. can continue. Yeah. So let's move on. Okay, so we know Uh, what is Wait data a second. and Tanmay, don't need to say sorry. We yeah, just it's fine. okay. Yeah, Was it's only fine. correcting your doubts. Yeah, continue, Siddesh. Yeah, continue. Yeah. Okay, so now we know what is data and we know how much the data cost. We read the news that Facebook is getting some law cases sued as for the private policy
the data leak and all things. So like that, we know the value of data. So now this storage of data is also one of the most important thing in any day-to-day life. So let's see about that. While seeing, so why do we need this database? Is is there really a need of database, or can we just use anything like folders, files? Like we use .txt, right? Simply a notepad. We can store data there also. So what is the real need of this file system? Sorry, database. But who says that files is not a database? File system is not a database. Yeah, they are a database also, but why like this specific databases, as we are going to see in the future slides? Why is the need? Does anyone know? Okay, so on large scale, it is not applicable. Okay. Okay, so ease of handling is there. Okay, so yeah, the proper organization and quick accessing. So many of the things you have said are totally right. So we will see that one by one. But before that, we will see basically we store the data in our computers, devices, laptops, everything. And in server, we also store in on the cloud, right? So we will see one by one, starting First, with our device. Yeah. let's say first discuss the problems with file system. Let's Yeah, 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 Siddesh, sure. you can continue. yeah. Uh, okay, so basically the problems with file system, as they have said, right? For a large scale of data, and also if let's say there is some duplicacy, and if you want to manage a large chunks of data, it would be very harder to use file system for that, right? Yeah, that's right. Yeah, so we will again come back to this file system versus database thing, like why is there is a need of proper different database, and what are its type. We will come to that later. So let's first get started with where we store this. Okay, so there are storage devices, mainly primary and secondary, right? Okay, so Prajwal has asked one question. We can implement binary B tree file system to do the same. Then is large data management only a valid reason? Um, okay, so basically, I think uh, I Prajwal, don't we will actually answer know. your question later. So just Yeah, begin with our basics first. yeah, I think that would be good. Great. So starting with the storage. So basically, we will start from the storage and then we will move on to again back to file system and databases. Okay. So in primary storage, there are two types of basically storage, primary and secondary. In primary, we have heard about RAM and ROM. I think everybody knows the full form and everything. So I will just tell you what are the two types of RAM, right? There is DRAM and SRAM. Does anyone have any idea what are they? Two subtypes of RAM? Okay, dynamic and static. Yeah, that's right. And that was a if that was a guess, that was a good guess also. So yeah, so basically DRAM stores and data capacitors, whereas static RAM uses that power supply method. So for static RAM, it can store it for a longer duration. Hence, means if power is connected, it will store it, and it will also retrieve data faster than DRAM. Whereas DRAM uses capacitor. Yeah, Tushar. I have no idea that much. Oh, okay. Yeah.
So I was saying that there are two types of RAM. Basically, in our PC also, these both subtypes are present, and actually SRAM is costlier. That's why we use DRAM also to minimize the cost. So that was about DRAM and static RAM. Static basically uses flip-flop like circuits to store data, but there is need of constant power supply, right? While Yeah. on the other hand, dynamic can use like it can use periodic refreshing type of thing. So like in capacitor, it can store as up to some electric charge for some time, right? After some time, we have to refresh it. So basically recharge it. That's actually the basic difference between DRAM and static RAM. So and then there is again ROM. So I think this everybody might have also heard about this EROM, EPROM, double EPROM. Does anyone know? Yeah, okay. So yeah, programmable read only. That's right. Yeah, programmable, erasable, and last one is electrically erasable read only. So it basically it is a non-volatile of type. So it will store a data even when the power is off, right? So, yeah. So I think this part everybody knows. So we will go ahead. If anyone have any question or doubts, you can ask. We are just starting our like database with basic file storage, like basic storage in our device, right? So we will see that first, and then we will move. Yeah. So erasable and इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में मेन डिफरेंस ये होता है कि इरेजेबल में तुम एक बार ही अगर जब यूज करते हो तो यू कैन राइट इट रीराइट इट ओनली वन टाइम बेसिकली व्हेन यू राइट इट you can't again rewrite it, while in the electrically erasable you can rewrite that disk by completely formatting kind of thing. So that is the basic difference. Now we mostly use electrically erasable read only. Okay. So yeah, going back, Tushar, second slide, please. So yeah, so now we are going to move on the this secondary storage, right? There are so many options in secondary storage, like hard disk, SSD. You must have heard about HDD and SSD, right? Everyone knows. So can anyone tell me any difference or which is more preferable? Okay, everybody is saying SSD. Okay. And you mention the reason comments. I prefer Does register. anyone know the reason? Yeah, SSD is more faster. Yeah, that's right. That's the reason. Everyone prefers SSD over HDD. Why? Can I ask why? Why it is faster? Why it is faster? Yeah. Are you asking me or in the comments? And in the comments, Yeah, in the comments. Okay. semiconductor based and no moving parts, right? For SSD, it is no moving parts as well as it is semiconductor based. So also the speed difference is like drastic that So HDD when almost. cost, which one would you prefer? Can you say it again, Tushar? I'm not Yeah, able to when hear we you. consider about cost, what would be preferable? About cost, I think HDD would be preferable, right? Yeah.
That's true. So what to prefer, speed or cost? What do you guys think? Say let's consider a scenario. I'm a like owner of a big company like Meta, and I want to store a billion people's data, about a billion people data. What would be more preferable for me? SSDs or HDDs? But I want to serve this data as fast as possible to the people, right? So why not SSD? So both means you will use in a hybrid, like in what condition? Uh, uh, crucial. Okay, it's a point about cruciality of your data as well. But I want to serve this data as fast as possible. So we use a hybrid system where we combine HDD and RAM to serve the data, not SSD. So for common general people like us, we prefer SSDs since we are working on our local machine only, right? But when we work on large scale, we prefer HDDs or more persistent storage that are less costlier and RAM for faster service. So Siddesh, you can continue. I guess most of the doubts are clear Yeah, now. yeah, okay. So as Tushar had said, we use them locally because the speed, we need speed, right, in our computer. So actually speed difference is really drastic. It's like 150 Mbps for HDD, while on the other hand, for SSD, it could go from 500 to 3000 Mbps. So depends on the quality. So let's move on to the tips. So do you know what these tips mean? Like anyone has any idea? Tapes, I think you must have heard CD and DVD. How many of you know tapes? So to clarify, these tapes mean magnetic tapes. Yeah, right one. Yeah, yeah. One you are right. So they are magnetic tapes consist of thin plastic like cover. So it yeah, yeah, I will use it right. So they have like they use it for the capacity. It has I think max capacity of 10 terabytes and speed is also good. So I yeah, magnetic tapes is one of the secondary medium of storage. Then there are CD and DVDs. You must, I mean, you must all have heard of CD and DVDs, right? Yeah. How many of you has used it for some operation like yeah, they are outdated, but yeah, I also used to watch the movies. The CDs also came with the games, right? Video games, or maybe pirated one mostly, most probably, but they were really nice. Like GTA. Yeah, And Andrea. yeah, So how many of you guys are going to buy GTA 6 CDs? yeah. CDs are not outdated, I guess. It is used in like if you guys played PlayStations or Xbox, CDs are still in use. Yes.
Even if you see the latest PS5, it still uses CDs to load different games. And there is a feature for those PlayStation or like Xbox to connect to internet and download those games, but there is a feature to load them with CDs as well. Yeah. Okay. So we will continue this CD talk later. So how move on to this network storage. So how many of you know this SAN and NS? Does anyone know? Okay, torrent. Yeah. So basically, SAN stands for Storage Area Network. Uh, वो क्या है बेसिकली मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं वो थ्रू द नेटवर्क कनेक्ट रहते हैं एंड ऑन अ मल्टीपल सर्वर शेयर्ड होते हैं सो बेसिकली आप अभी हाँ या क्लाउड सो आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री दे might seem familiar like we can say all three are cloud storages but there is a little difference yes right ns servers yeah so basically as I said storage area network में क्या होता है multiple storage devices रहते हैं and they share the multiple servers over the network right and in NAS network attached storage instead of storing the files locally they are stored in physically separate storage device over the internet basically drive अपन जिसको बोलते हैं most of the we use drive right okay तो chat में तो अलग ही telegram का शुरू है yeah NAS means network attached storage so basically instead of storing the files locally we can store it over the internet like it will be stored in physically separate storage device somewhere else but for us it will be on the internet yeah so cloud मध्ये काय यूज करतात means in context of can you say what या क्लाउड मध्ये पण हे नेटवर्क स्टोरेजच वापरला जाते कारण क्लाउड मध्ये कसं असतं मल्टिपल डिस्क एका असं कॉमन ब्रिज थ्रू कनेक्ट केलेले राहतात एचडीडीच असतात मोस्टली असे 10-15 एचडीडी एकसाथ जोडून ठेवलेले असतात कंबाईंड स्टोरेज पूल बनवलेलं असतं आणि तेच आपल्याला सर्व होतं कारण की त्यात ते बॅकअप आणि रिकव्हरीचा पार्ट सुद्धा कन्सिडर केला जातो आणि पुन्हा तू बघायला गेलं की रेड कन्सेप्ट पण लागतात तिथंच मल्टिपल हार्ड ड्राईव्हचा कसं पार्टिशन करायचा बाकी साध्या ड्राईव्ह मध्ये वगैरे तेवढा काही विचार नाही केला जात जसं गुगल ड्राईव्ह झालं किंवा वन ड्राईव्ह yeah okay फुल फॉर्म फॉर एनएस इज नेटवर्क अटॅच्ड स्टोरेज तू विचारला सिद्धार्थ परत हाँ हाँ नाही क्लाउड मध्ये बघायला गेला ना मोस्टली एसएसडी वापरतच नाहीत अरे आणि कसं ते नेटवर्क स्पीडवर डिपेंड करतं ना तुझं अपलोड आणि रिट्रायवल तर त्यामुळे हा बेसिक SSD कॉमन HDD नेटवर्क आणि हार्ड डिस्क रीड राईट स्पीड कम्पेअर केला ना हार्ड डिस्क रीड राईट स्पीड नेटवर्क स्पीडला आउटटेक करते सो काही फरकच नाही पडत तू एसएसडी वापर किंवा एचडीडी वापर नेटवर्क लेवलला या सिद्धेश कंटिन्यू हा तर चालेल सो आपण होतं ओके सो बेसिकली देन SAN NAS अँड देन द क्लाउड स्टोरेज ऑलमोस्ट सगळ्यांनाच माहिती आहे अँड कॅपॅसिटी या तिघांची can be increased or decreased as per requirement. So that is not the case. And speed, जसं तुषार म्हणला, it depends on your network. And याचं application आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे बॅकअप ऑफ युअर डेटा पर्सनल क्लाउड इवन तुम्ही IoT साठी पण हे यूज करू शकता ओके विच अमॉंग द थ्री इज द
बेस्ट अँड मोस्ट युजफुल. म्हणजे क्लाउड स्टोरेज हे सर्वात बेस्ट आहे. कारण त्याच्यामध्ये म्हणजे खूप रिलायबल आणि सगळंच असतं. पण ॲज अ फॉर अ कंपनी किंवा मी याच्यासाठी म्हणजे टीमसाठी जर तुम्ही पर्सनल यूजसाठी करत असाल तर तुम्हाला NAS सुद्धा म्हणजे काम करेल. काही हरकत नाही. ऍक्च्युअली कसं असतं, आता क्लाउड स्टोरेज बघायला गेलं ना, क्लाउड स्टोरेजच्या बॅकएंड मध्ये बघायला गेलं ना, की बोथ NAS आणि SN राहतं. कंबाईन ना. कंबाईंड राहतं दोन्ही. कारण NAS ला अजून आपण ब्रेक केला ना, NAS काय असतं, सपोज 4-5 हार्ड ड्राईव्ह घे, तू 4-5 हार्ड ड्राईव्हला कनेक्ट कर आणि स्टोरेज पूल बनव. सपोज माझ्याकडे 1 TB चे 5 ड्राईव्ह आहेत, ते मी सगळे एका साथ जोडले, ते की 5 TB एक तुला स्टोरेज पूल भेटतो. आणि तो 5 TBचं परत मल्टिपल असे कनेक्ट केलेले जातात, त्याचं एक कॉमन पूल बनवलेलं जातं. आणि प्रत्येक IP ला ते होस्ट केलं जातं. मल्टिपल असे ड्राईव्ह होस्ट करतात वेगळ्या ठिकाणी. ते आपण SAN म्हणू शकतो, SAN. मग मल्टिपल SAN कंबाईन केले की आपलं क्लाउड स्टोरेज मध्ये बनतं, क्लाउड स्टोरेजचं असं इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट्स नॉट लाईक की क्लाउड स्टोरेज वापरलं की मग ते स्पेशल झालं. क्लाउड स्टोरेज वापरलं म्हणजेच आपण सगळे वापरलं, SAN वापरलं, NAS वापरलं, वापरलं. ओके सिद्धेश, कंटिन्यू. तर आपला स्टोरेज डिव्हाइसेसचा तर पार्ट कव्हर झाला. सो या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं की कुठे कुठे आता डाटा आपण कशा कुठे पद्धतीने स्टोअर करू शकतो. सो बेसिकली आता जर विचार करायचा झालं तर तुम्हाला काय काय वाटतं, कुठे कुठे फाईल सिस्टीमची गरज पडत असेल यामध्ये, किंवा इव्हन डेटा स्टोरेजसाठी कुठे अशी स्पेसिफिक म्हणजे गरज हवी? डज एनीवन हॅव एनी आयडिया की रॅम किंवा रोम मध्ये फाईल स्ट्रक्चरची गरज आहे का किंवा डेटाबेसची? Okay, so sorry. So I was asking that in which of this whole structure where we would require file system or a database, like in RAM, ROM, HDD, SSDs. Anyone have any idea? So actually, so RAM actually doesn't use file system, and ROM also may use a specific structure to store the data, but it doesn't like use proper file system. Tushar, do you know anything more about this? What about what? Does RAM and ROM, they don't require file system, right? No. So As we consider of modern day RAM, both RAM and ROM require file system. okay, can you tell me about it? What happens is that there are two parts. Okay, you have hardware and you need some sort of code or piece of binary to read those hardware structures. Like when there is a storage medium like RAM, how the RAM stores data in form of electrical pulses. RAM stores the data, so we need to read them as from a software perspective as well. Whenever an operating system loads and it recognizes there is a physical device like RAM, there is something piece of software that must be loaded onto RAM so that we can easily access RAM as per our needs. So it is more like a structure of like for data storage rather than a system, right? Abstracting, you can consider it as, suppose if what we consider is that RAM is just you can continue. I will think of it and try to explain more detailed. Yeah, sure. We will try to come up with simpler or like more better example. Okay, so basically HDD, SSD, we load our OS, use the OS. So in OS, different OS, we use different file systems, right? Does anyone know like which in, let's suppose, Windows or Linux, which file system do we use generally?
Yeah, so in Windows NTFS, right? And yeah, in Linux we use extension 4. And in Mac OS we use HFS, I think HFS plus or Uh, something like that. Yeah, APFS, okay. Yeah, hmm. extension 4. So we use this file system in HDDs, SSDs. In magnetic tape, we use linear tape open library kind of thing, LTO or the tape library file system. So it was provided by the IBM as Aradhya has previously said. IBM still uses it, and there exists some tape library file system. And for the CDs and DVDs, like they were almost outdated as he had said. They used ISO 900 and 9660 or universal disk format type of storage. So for the other network file system, uh, like network storage, we can use network file system. Basically, we can use combination of many NTFS, ZFS, and there is one specific like what we say file system made for NAS, that is server message block or the common internet file system. You should look it up if you have time or are enthusiast about it. Yeah. So you are not able to understand what is meant by file system here. So okay, to Tushar, can you give him an answer? I'm not able to understand what do you mean by file system here. Okay, so let's So see here. Okay. So, so let's consider this example of this hard disk structure over here, right? Which is, I think it's of magnetic disk or it's just a normal hard disk structure. I don't know. yeah, yeah, it's a basic SSD No, no, no. The head and track structure. part is yeah, it's I guess Yeah, hard that disk. is of HDD. Yeah, yeah, HDD. So, Shailendra, Siddharth. Siddharth. So, Siddharth, let's consider the sector that is marked as red. Okay. So, when that sector, their sector is marked as red, and suppose it contains data called as name and your name Siddharth, and I want to read that piece of data on that hard disk, and I want to print it on my desktop or terminal wherever you want to print it. So when you command your computer, I want this piece of data. So how will your computer understand that this piece of data lies on this part of disk? You understand my question? How will this data will how computer will be able to find out this piece of data? So for that, or if you want to write a piece of data on this disk, so how does computer understand where to write this piece of data so that my previously remaining data shall not be erased? Okay, so for that we actually need file system to understand where to write this piece of data, how to write this piece of data, and how to retrieve this, and from where to retrieve this. For all that things we need a file system. This file system basically stays on every storage media, even if it's a HDD or even it's if a RAM. Did you understand what I was trying to say? Okay, continue, Sudesh. Okay, yeah. So basically, as this slide here we can see different picture. I think you have seen this SSD, and also as Tushar said that in a SDD there is a head pointer, right? So wherever we want to retrieve data from, the head pointer will move to that. First of all, the sector. Yeah, sorry. So first of all, track will be set in which track the particular like address is there. Then we will see the sector in that track, and after that we will point our header toward that address, and from that we will retrieve our data. And so does for writing. We will do the same in reverse order, right?
I hope everybody is able to understand that. Yeah. So, okay, moving on to the next part. Tushar, next slide, Yes. please. So, yeah, as our previous question, so why is there need of a database when there is already a file system, right? Coming back to Prajwal's question also about B-tree, right? So I would like to first give the mic to the audience. Does anyone can give me any more points to add for this? Many of you said that for a large scale, it is better to use database, right? Yeah. Is there any another reason? Do you know? Yeah, right. Security and encryption, but it is also present in file system. So how is it better in database? Does anyone have any idea? Yeah, it can be easily retrieved and stored. Like storing it in a file system is like much harder task rather than retrieving it from a database. So as these two images suggest, like the left image is of file system storage. So there is a master directory, file directory. Like in Linux, I think it most of us we know as a root directory, right, Tushar? Yes, yes. Yeah. So in root directory there are other folders and there are different file structure about it. Yeah, the load which it take to. Yeah, so I'm continuing with your answer. While till that I will explain. So in master file directory, there are many subdirectories as there can be multiple users in an single device. It will store multiple user directories and their personal files and everything, right? Whereas in database, we can separately store all the data and we can use database management system to retrieve it. So basically, database management system will not be the like uh, what we what like क्या बोलते हैं वो हमें एक्चुअल नहीं देगा एक्चुअली डेटाबेस एप्लीकेशन और मैनेजमेंट सिस्टम दोनों मिलके अपन को ये करता है मतलब हेल्प करता है डेटा रिट्राइव और मतलब पूरा क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशंस करने में तो दैट इज वेन बेसिक डिफरेंस अपने को पीछे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी वो कहाँ स्टोर हो रहा है कैसे स्टोर हो रहा है rather than we can focus on what data we want and what should be returned to or updated in the database. What kind of database are we referring to? Like file-based database or structured one? So are you asking currently or in the future? Like what? So yeah, currently, like see, file-based database can be used for like as Tushar had said the about file systems, right? It is an also type of a database. So currently we can use both, but depending on your situation, what do you want to use? We will come to that part also in types of database, which we should like see upon. And okay, so is there any further question? Pawan? I think yeah, we should move forward, Tushar. Yeah, yeah, you can move forward. I will answer the questions in chat. Yeah. So next, yeah.
So basically, we will just see the difference between this storing and retrieving, right? So storing it in a file system and storing it in a database. So in the left chart, if you can see uh, that I think it is visible, right? If it is not, I will read out that basically in database we use structured tables, as I have said, or and whereas in file structure it is an unstructured format like uh, Pawan has asked that file-based database or structured one. Okay, so in database we use structured tables mostly in SQL, or we will see about this SQL, no SQL later on. And then there is also an aspect called data normalization. So typically what normalization means, it reduces anomalies like read anomaly, update anomalies, delete anomalies, and many. So we will see that part later on also. It reduces redundancy may occur in file system. So what does this redundancy means? It basically means that अगर simply कहना चाहे तो we can have same data in multiple folders, right? मतलब वही वही डाटा वापस से आ रहा है, अब उसकी नीड नहीं है. We want like unique data. For example, let's say phone number or email address. We want every email address to be unique. But if some person is giving you address again and again, then it might be stored more than one times in file system. Whereas in database, we can use the process of normalization to reduce this redundancy, duplicacy, basically. While also in database we use indexing. So this indexing is basically like ID. We can give ID or a primary key. So what this primary key basically does, it is a unique key from which you can identify a full column based on that key and based on that value of a row. I was asking that in the current presentation, are we comparing file system with the file-based database or file system with structure SQL-based? So, like in the current session, we are just comparing file system and database in general, like file-based database bases and other databases. Okay, so again, moving on, that another aspect is acid properties. So we will see what this acid means in the further slide also. What is this data integrity, consistency, all about that, which doesn't come in file systems, and about this query language. So does anyone know what is meant by query? Can anyone tell me what is query? Yeah, request. Okay. Any other answers? Okay, command to work with database. To interact with database like command. Okay, very good. Which we did. So yeah, almost all answers points to one thing. कि query मतलब basically yeah inquiry. Yeah, right. So that is a great word to summarize that we want to ask something to a database to get feedback, right? So basically that is query. So SQL uses that structured query language. It is a full form is structured query language. So basically we have query for everything, like for reading the data, for updating, for deleting, and for any other purpose. Yeah. Okay. So yeah, Pawan will continue. So in file system, whereas there is no query language. For example, let's say I have some file name like xyz.txt, right, in my file in my PC.
So what I will do to find it, does anyone know? I use Windows basically. So does anyone know how can I find it if I don't know where it is stored? Does anyone have any idea? How will you try to find it? Do you know the file name? Yeah, I just know the file name. I'll Uh, just search it in the C drive. yeah, right. I You will search it in the C drive, E drive, all the drives basically, and you know how much time it takes to load overall the screen. Yeah, search it on the search bar, right? Yeah, So exactly. whereas in database, we can basically ask what we want. So if, for example, there is some data in that xyz.txt, right? I want that data. So basically, what I will do is, if there is an SQL like table like SQL database, I will use the select command and I will use this query called select star from all that table name that where that data xyz.txt files data is stored in the database. So there are multiple ways to store it in different databases. We will see that in the future episodes. So that is not the concern, but it will retrieve it very faster rather than searching for a file. I hope this thing is clear. So retrieval is uh, like using SQL queries, and this query optimization really helps us to like retrieve process data faster. The work of data flow is faster in databases. Yeah, okay. And also the, as someone had said, the security, right? That in database we enforce the like enforces access control with granular permissions, and also there is part of authorization authentication for every database, and there are roles, right? Some user you can grant, let's suppose there is an administrator, he can have all the roles to create, read, update, delete, whereas in file system we can also use three roles. That that does anyone know what three roles there are in file system? So can anyone use database to store the data, or only the one who has idea of SQL? So basically you should know the basic SQL. Basically you are storing data in database currently now, but if you want to use it for a like really understand it how it is going, then you have to learn the SQL and know SQL. I mean everything, whatever thing you want to be learn. So okay, so I think we have seen about storing and retrieving. Yeah, Aradhya is coming up with the para. Okay, till now we will move the our conversation. Yeah, so next slide please, Tushar. Okay, okay. So there are many advantages of data using database. So basically we'll start one by one. That it resolves data redundancy issue. So redundancy, as I previously said, basically the duplication of the same information in multiple places. So that can be removed using database. Yeah, and one of the method, like best thing about database is it can be used for backup and recovery. Like databases have built-in mechanism for creating backups and restoring the data in case of accident like failure, power failure, or crash of a program, or things like that. And then there is a consistency of data. So as I have said previously, we use the process of normalization. So if I try to explain the normalization in simple words, मतलब कुछ एनोमलीज होते हैं. लेट्स सपोज मैं और तुषार अभी जैसे आप है,
हम एक ही फाइल पे किसी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और मैं उसको चेंजेस करके मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, वो चेंजेस करके मुझे वापस शेयर कर रहा है, राइट? सपोज वी आर शेयरिंग, वी आर यूजिंग एडिटिंग दैट फाइल एट द सेम टाइम, और मैंने उसको शेयर किया, उसने मुझे शेयर किया, तो मैंने जो उसे शेयर किया है वो अगर उसमें एडिट करेगा तो ठीक है, पर अगर हम दोनों सेम ही टाइम पे एडिट कर रहे हैं और बाद में शेयर कर रहे हैं, तो उसने जो शेयर किया था मैं वो इग्नोर करके आगे आगे में कर जाऊंगा, और सिमिलरली उधर भी वही होगा। तो ये एक वन ऑफ द एनोमली हुई, ऐसा ये अपडेट एनोमली या एडिटेड फाइल एंड ओरिजिनल फाइल दोनों स्टोर रहते हैं। या सो बेसिकली सिद्धार्थ, फिर कैसा हुआ कि मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा, राइट, कि ऊपर क्या चेंजेस हुए, फिर वो कॉपी पेस्ट करके उसके बाद चेंजेस करने पड़ेंगे। हम दोनों मिलके एक ही साथ चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट? एक ही समय पे अगर हमें चेंज करना है उस फाइल में। तो हाँ, ओके, सो next point is that integrity constraints are easy to implement. So before that, और एक चीज, मतलब ये अभी डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, तो it basically means accuracy and reliability of the data in database. तो as I have given you previous example कि तुषार और मैं दोनों एक ही इस पे वर्क कर रहे हैं फाइल पे, और हम कैसे कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ फिर उसको भेज रहा हूँ, फिर वो उसमें एडिट कर रहा है मुझे भेज रहा है। अगर इसमें कितनी एक्यूरेसी रहेगी, अगर समझो मैंने उसके पार्ट में कुछ एडिट किया और उसने वो वापस कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, सो एक्यूरेसी वहाँ खराब हो जाएगी। तो इन जनरल ऐसे एक ही फाइल पे अगर मेरे को मल्टीपल काम करना हो मल्टीपल यूजर से, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। और कंसिस्टेंसी बेसिकली मीन्स कि डेटा रिमेन्स एक्यूरेट फॉर द लाइक इट्स लाइफ टाइम, रिलायबल, क्या बोलते हैं, अगर मैंने आज उसमें कुछ वर्ड्स टाइप किए लाइक हेलो तुषार, तो अगर मैं वो फाइल कल भी ओपन करके देखूँ तो वो हेलो तुषार ही प्रिंट करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए। ओके, सो पुटिंग इट इन सिंपल वर्ड्स, ओके, तो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मीन्स बेसिकली रूल्स होते हैं, रूल्स टू एंश्योर दैट डेटा एंड डेटा एक्यूरेसी आर like validated and can be applied easily. Yeah, okay, so Pawan, as you have asked, Aradhya has paragraph for you. Yeah, okay, so yeah, you read it, that's fine. We will continue. So security mechanism again, so as I have previously said, there is an access control, किसको कितना access है, authentication is necessary in database also, that कि ये जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी अपडेट है ये ऑथेंटिक है, करेक्ट वे से आई है, फॉर्मेट सिंटैक्स वो सब चीज़ें। उसके बाद ऑथराइजेशन की, जो जो भी ये कर रहा है उसको परमिशन है मतलब कि करने की, ये सब चीज़ें। बेसिकली अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहा कहा जाए तो सिक्योरिटी मतलब, अगर समझो अभी हम हॉस्टल पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, अगर हमारे रूम के चाबी से ही, मतलब हमारे हमारे पास जो चाबी होगी उससे ही हमारे रूम का लॉक खुलेगा, राइट? अगर दूसरे के चाबी से भी वो लॉक खुल रहा हो, सिक्योरिटी का पॉइंट ही नहीं हुआ। So basically you can understand it like that, simpler term. Okay, so then there is another point, that it is an data independence. Then what is this data independence mean? Basically there are two types, logical data independence and physical data independence. So पहले logical को समझते हैं. So logical data independence refers to the ability to change the logical structure or schema of the database without affecting the application. तो इसको मैं अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहूँ
So suppose like we have a database for a library, okay, and we decide to recognize this database by creating separate tables for like two types of books, like fiction and non-fiction, let's say. And in that thing, like database for library, the logical data independence will allow us to like make structural changes without rewriting the software. So basically, अगर मैं उसमें कुछ changes कर रहा हूँ, like we have separated the fiction and non-fiction books, right? So अगर उनमें मैं changes कर रहा हूँ, तो basically फ्रंट एंड में मतलब अगर अपन सर्च करेंगे किस बुक के बारे में, तो फिक्शन नॉन फिक्शन दिखाएगा विदाउट अफेक्टिंग ये, मतलब कुछ सामने अपने को ऐसा लगेगा कि नहीं कि कुछ चेंज हुआ है, पर एक्चुअली बैक एंड डेटाबेस में डेटा इज इंडिपेंडेंटली सेपरेटेड अबाउट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक. आई होप दिस एग्जांपल is understandable. Okay, so moving to the physical data independence. So physical data independence enables the change to physical storage. So basically ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अगर समझ जो कि वही लाइब्रेरी का एग्जांपल ले वापस, तो उसमें अपन सब समझो मैं अभी लोकल डिवाइस अपना एसएसडी में सब स्टोर कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप के, ओके. एंड देन मुझे लगा कि अभी लाइब्रेरी का काम बहुत बढ़ रहा है, मुझे स्टोरेज अच्छा चाहिए, तो मैं समझो नेटवर्क अटैच स्टोरेज एनएस में स्विच हुआ, राइट, ड्राइव पे अपलोड करना बेसिकली. तो उस टाइम फिजिकल डेटा जो भी है मेरा, वो it provides that the transition from this local device storage to NAS without requiring any changes in the library software. मतलब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा अगर डेटा का लाइक पीछे से स्टोरेज सिस्टम चेंज किया तो. होपफुली दिस एग्जांपल इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल. किसी को कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ सकते हो. Tushar, would you like to add anything to this? No, Siddesh, you can move on. Yeah, okay. So then there is multiple user access. As I have previously said, like my and Tushar example on editing one file, like we can do it at only at one time, right? So only one user can edit the file or update the file at one time. Whereas in database, we can use the multiple user access. So like multiple users can access and manage data simultaneously while maintaining this data integrity, right? So this is one of the like most important point in databases. Then there is last point, last but not the least, data abstraction. So data abstraction क्या होता है? Basically अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो I think most of you might know this data abstraction term, right? कोई कहना बताना चाहेगा कमेंट में, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ. क्या किसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता है? In general, abstraction मतलब abstraction Separation, no. But so basically, yeah, anyone is giving answers? Wait. Okay, hiding complex processes. Yeah, it is quite close. Basically, yeah, we are hiding the process, unwanted or irrelevant details from the end user. Basically, मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए, दैट अगेन लाइब्रेरी के एग्जांपल पे ही जाते हैं. सपोज मुझे बुक चाहिए एज ए स्टूडेंट कुछ, और लाइब्रेरियन को वो अपडेट करना है डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में. तो
डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये होगा कि हमें एक्चुअल में पता नहीं रहेगा कि उस अपने डिवाइस पे कैसे कर रहा है डेटाबेस एक्चुअली, कि बैकएंड में क्या हो रहा है, कि अगर मैं यहाँ से बुक चेकआउट करूँ तो यहाँ से काउंट कम हो रहा है, ये हो रहा है। बेसिकली हम में से स्टूडेंट और लाइब्रेरियन दोनों को किसी को भी डेटाबेस एक्सपर्ट नहीं होना पड़ेगा सिर्फ डेटाबेस यूज करने के लिए। वी कैन यूज इट, लाइक इट विल बी यूजर फ्रेंडली बिकॉज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली जो काम का मतलब डाटा है उतना ही हम दोनों को पता चलेगा इन अ सॉफ्टवेयर, राइट? I think example was clear. If everybody understood the example, which type anything like, yeah, hiding the unnecessary part of the data. That is right, Pratiksha. Okay. So I think example was clear. Move on. Yeah, Tushar. Next slide. So yeah, this is one thing. We are just to let you know uh, कि मतलब तीन टाइप ऑफ मतलब architecture of a database. There are three types: single tier, two tier and three tier. तो बेसिकली इसके बारे में आप आगे तो पढ़ोगे, अभी एस वाई या मोस्ट ऑफ द एस वाई पीप्स विल लर्न अबाउट दिस। तो मैं अभी इन सिंपल जस्ट बताता हूँ कि सिंगल टियर में क्या होता है। बेसिकली जैसा मेरा पीसी है अभी, उस पर मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, समझो कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, डीएमएस, लेट्स से माई एसक्यूएल। तो उसमें मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो मेरे लोकल पीसी मतलब लोकल डेटाबेस पे ही चेंजेस हो गए और रहेंगे, राइट? तो ये हो गया सिंगल टियर। वैसे ही टू टियर में क्या होगा कि देयर विल बी अ नेटवर्क कनेक्शन इन सर्वर साइड, देयर विल बी डेटाबेस। सो फॉर रिट्राइवल एंड अपडेशन और एनी ऑपरेशन ऑफ डेटा, आई विल यूज डीबीएमएस application for to get the data from server or to give a data to a database, right? Via two tier. And in three tier क्या होता है, मोस्टली जो बाहर आई मीन कंपनीज और इसमें यूज होता है वो थ्री टियर या उससे आगे का होता है। तो बेसिकली सर्वर साइड भी जो मशीन रहता है उसमें भी सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन रहता है और अपना क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट मांगता है, मतलब डेटा फेच करने का क्वेरी, जो भी अपन एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे तो जो जाएगी सर्वर तक, वो बेसिकली वहाँ से डेटा मांगेगी, फिर सर्वर डीबीएमएस एक्चुअल डेटाबेस से लेके अपने को वापस रिटर्न करेगा क्लाइंट डीबीएमएस को डेटा। तो सिद्धेश या एक क्वेश्चन है कि हम्म, इंस्टाग्राम कौन सा टायर का डेटाबेस मतलब टायर फॉलो करता है और व्हाट्सएप कौन सा फॉलो करता है? एक्चुअली ये मुझे भी देखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे कैसे सारा डेटा क्लाउड पे मतलब स्टोर होता है, अगर ऐप हाँ डिलीट करके इंस्टॉल करोगे तो रिट्रीव हो जाता है, हाँ, पर व्हाट्सएप राइट, का अपने ही डिवाइस में पूरा डेटा स्टोर होता है। या तो राइट, कौन सा टायर बोल सकते हैं उसको, जबकि पर कि उसका डीबीएमएस पर फिर भी उसके रिक्वेस्ट तो उनके सर्वर पे जाके आते हैं ना, राइट, राइट, राइट। तो कौन सा तो टायर बोल सकते हैं? बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम को थ्री टियर बोल सकते हैं क्योंकि पूरा डेटा मतलब स्टोर तो उनके सर्वर्स पे रहता है, राइट आराध्या? यस सर, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप आई थिंक अभी अपन जैसे लोकल डेटाबेस की भी फाइल बनती है तो पर एक्चुअल में कनेक्शन आई थिंक सिंगल टियर तो होगा ही ऑफ कोर्स, बट वी डोंट सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम व्हाट्सएप, राइट? तो बैकअप का ऑप्शन रहता है उसमें भी, व्हाट्सएप में भी। हाँ, पर तो वो अपने ड्राइव से ही लोकल बैकअप होता है ना। या ड्राइव से ही होता है, सो आई वुड गेस सिंगल टियर। यस। या So if the audience is correct with means has understood या this tires, then can we can move forward. ओके, सो should we move forward guys? Yeah, so
moving ahead. So this chemistry now, acid and base. So let's move on to this chemistry part. How many of you know this acid base? पढ़ा तो होगा ही 11 12 पूरा. कोई एसिड बेस का कोई प्रॉपर्टी बता सकता है? हाँ तो पढ़ा तो है आपने. Yeah, acid pH below 7 and base above 7. Yes, right. और सर या किसी को पेंट से सर नहीं थे क्या? और सर तो भाई नहीं बोले. चलेगा. तो एक्चुअली में डेटाबेस में एसिड बेस का ये अपन एक्रोनिम यूज करते हैं सिंपली कंसेप्ट मतलब प्रॉपर्टी समझने के लिए. तो एसिड बेसिकली जैसे लिखा है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. तो एक बाय एक समझते हैं इसको. सो इन एसिड it means that like all the operation within the transaction are either completed successfully or either like rolled back, totally rolled back. So basically 1-0 टाइप समझ लो इसको. अगर मैं कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो आइदर वो कंप्लीट ही होगा नहीं तो बिल्कुल ही कंप्लीट मतलब ऐसा पार्शियल कंप्लीशन हो ही नहीं सकता. दैट इज बेसिकली एटॉमिसिटी. देन देर इज कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है लाइक ट्रांजैक्शन का ही लेते हैं. दैट ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर. लाइक मैं कुछ अभी इनपुट मतलब तो सर थोड़ा इको हो रहा है माइक. ओके तो मैं जा रहा कंसिस्टेंसी पे. तो बेसिकली कंसिस्टेंसी क्या होती है? अगर मैं अभी कुछ चेंजेस करूँ तो वो बाद में भी वैसे ही मतलब वो कंसिस्टेंट थ्रू आउट द किसी भी डिवाइस से मैं अगर उस डेटाबेस को रिट्राइव करूँ तो उधर के चेंजेस भी यहाँ रिफ्लेक्ट होने चाहिए. सो दैट इज बेसिकली कंसिस्टेंसी. देन देयर इज एन आइसोलेशन. तो सर मूव बैक टू पीपीटी प्लीज. ओके. Yeah, consistency basically is what's done is done. That is very simple line to understand it. Then there is an isolation. So isolation basically ensures that like concurrent transactions do not interfere with each other. तो like समझो मैं वो वापस फाइल के एग्जांपल पे जाता हूँ कि हम दोनों जैसे तुषार और मैं दोनों सेम ही चीज को एडिट कर रहे हैं. रादर देन एडिटिंग अगर मैं कुछ उस चीज पे काम कर रहा हूँ तो उसका मेरे इस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना मेरा उसके पार्ट पे इफेक्ट होना चाहिए बेसिकली. तो बेसिकली हमारे दोनों का आइसोलेटेड रहेगा. देन देर इज द ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी बेसिकली मीन्स whatever changes are there they will be permanent. I mean they will be saved for a longer time. They will survive system failures, power failure, crashes and all. So that was basic acid properties. अगर कौन से प्रॉपर्टी में डाउट हो तो पूछ सकते हो. ओके आप डाउट्स डालते रहो तब तक अपन बेस भी समझ लेते हैं. तो बेस में होता है BA. सो बेसिक बेस का BA स्टैंड्स फॉर बेसिकली अवेलेबल. दैट इज दैट ये जो बेस होता है दे आर ऑफ्टन यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स दैट प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी ओवर द लाइक कंसिस्टेंसी. बोल सकते हैं कि व्हाट डन इज डन से ज़्यादा बेटर कि जो भी मतलब मैं कभी भी एक्सेस करूँ मुझे अवेलेबल चाहिए. कभी ऐसा हो सकता है ना कि मैंने समझो कुछ अपलोड किया वो अभी तुषार को देखना है तो कंसिस्टेंट होने में मतलब डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने में कुछ टाइम लगेगा. तब तक के लिए तुषार को लोडिंग स्क्रीन आएगा कि क्या डाटा अपडेट हुआ है पता नहीं. तो उससे बेटर है कि जो भी अवेलेबल है वो मुझे दे दो अभी करंटली. तो
बेसिकली जो भी अवेलेबल है वो बताओ, फिर बाद में अपन अपडेट करते हैं। तो उसका ही है सॉफ्ट स्टेट। तो सॉफ्ट स्टेट में क्या होता है, बेसिकली दैट सिस्टम में चेंज ओवर द टाइम इवन विदाउट द इनपुट। सो बेसिकली मैंने कुछ यहाँ से इनपुट दिया है, तुषार एक्सेस कर रहा है, को प्रीवियस वाला ही दिख रहा है क्योंकि वो अभी तक पूरा अपडेट हुआ नहीं है कंसिस्टेंट। तो उसको प्रीवियस दिखा और बाद में उसने एक आध मिनट बाद वापस से चेंज किया, तो उसको देखा कि अरे ये वापस चेंज हो गया है। दैट विल बिकम इवेंचुअली कंसिस्टेंट, राइट? So like eventually consistent system guarantees that given some amount of time, it will update and it will come to a consistent state. Okay, so atomicity, okay, पहला होता है property of acid में that if like कुछ भी all the operations हो within a transaction, so basically मेरे समझो 4 ऑपरेशंस है, 4 ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ एक ट्रांजैक्शन में। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरे कुछ 4 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं मैंने और वो कंप्लीट उसको एक ट्रांजैक्शन मान लो, ठीक है? तो अगर मैं वो कोड बेसिकली पास मतलब रन कर रहा हूँ, तो आइदर वो चारों लाइन रन होने चाहिए और एक अगर नहीं होने वाले एरर आने वाले तो एक भी लाइन रन नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा पार्शियल अपडेट मत करो कि 2 लाइन रन हो गए, फिर मैं रुक गया और आगे के 2 लाइन मिसिंग हो गए। सो अगर और एक सिंपल अगर नॉन टेक्निकल टर्म्स में, ओके यू गॉट इट। अगर नॉन टेक्निकल टर्म्स में फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आई एम ट्राइंग टू बेक अ केक, ओके? तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैदा लाया, शक्कर लाई, मिल्क, वो सब सोडा लाया, ओके? तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या है, सामान खरीदना, सब मिक्स करना अच्छे से, फिर ओवन में बेक करके सर्व करना। तो ये मेरा पूरा ट्रांजैक्शन हुआ। अगर मेरे में इसमें डेटाबेस में ऑटोमेसिटी नहीं रही, तो मैंने सब सामान तो लाया, सब मिक्स भी किया, पर मैं ओवन में डालना भूल गया। उसकी वजह से आखिर के 2 स्टेप मतलब आपको केक तो मिला ही नहीं, पर सामान का पैसा तो खर्च हो गया, तो मतलब पॉइंट ही नहीं रहा। अगर केक आइदर बनाना हो तो पूरा मतलब खरीदा हो तो पूरा आखिर तक जाओ 4 स्टेप तक, और रादर खरीदो ही मत, सिंपली। Yeah, either you see all the changes or none of them, 0 or 1. I hope this is clear. Yeah, so money transfer is the like main application also of this property. Okay, तो ठीक है, जो जितने लोग अभी वेट कर रहे हैं उनके लिए और एक सरप्राइज भी है। तो लेट्स से मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो अभी आते हैं इस चीज़ों पे। अभी जो जितने लोग रुके हैं, जो सब आए थे कि ये टाइप ऑफ डेटाबेस सीखेंगे, ये वो सीखेंगे, वो देखेंगे। चलो अभी गेस करो इनमें से आपको कितने कितने पता है, बताओ कमेंट्स में। ओके, पोस्टग्रेस, स्वार्म, एसक्यूएल, ओके, मोंगो इज देयर, फायरबेस, ओके ओके ओके। ठीक है, और कोई वो आए वाला, रेडिस, बताओ। ओके नाइस। शाउट आउट मिलेगा, यूट्यूब पे स्ट्रीम शुरू है। फायरबेस, ओके। डॉल्फिन वाला बताओ, या कौन सा भी, दोनों में से कोई भी डॉल्फिन वाला बताओ। आई मीन आई थिंक एक शार्क जैसा मोर है, बट डॉल्फिन। आई डॉल्फिन एलिफेंट, नाइस सिद्धार्थ। और कुछ गेस? तो अभी अपन आज का तो बस इंट्रोडक्शन था डेटाबेसेस को, क्या क्या होता है, कैसे होता है। अभी इन सब डेटाबेसेस में से अपन कुछ पर्टिकुलर जो करंटली अच्छे यूज में है और अपने को पता चाहिए, वो आगे के एपिसोड्स में देखेंगे ही। ओके, हिमांशु ने रेडिस बोला, फायरबेस, फायरबेस बहुत आ रहा है। ओके, आर यू श्योर फायरबेस ही है या फिर कुछ अलग है? ओके, डॉल्फिन डीबी।
Manvat, we will try to create that Dolphin DB. तो चलो फिर अभी देखते हैं एक्चुअल में कौन कौन से हैं. So तो let's बेसिकली go. या तो बेसिकली मैंने 7 टाइप में सॉर्ट किए हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. पहला अपन की वैल्यू पेयर के इसमें समझ सकते हैं. देयर इज द रेडिस डेटाबेस एंड अनदर एलिफेंट डीबी. नो, यस, ओके. तो एलिफेंट बेसिकली पोस्टग्रेस था. या ओके. तो एक हो गया की वैल्यू के बेसिस पे. दूसरा हो गया वाइड कॉलम. तो ये जो सब कॉन्सेप्ट है वाइड कॉलम, डॉक्यूमेंट, रिलेशनल, ये अपन अभी फ्यूचर एपिसोड्स में देखेंगे वन बाय वन. तो वाइड कॉलम में थे कसांड्रा और एज बेस. उसके बाद डॉक्यूमेंट में आता है फायर बेस और फायर स्टोर, वो भी एक है. धोनी और मोंगोडीबी तो सबको आपाची क्या तुषार धोनी. काय नाही ओके. हाँ हाँ. तो डॉक्यूमेंट में आते हैं मोंगोडीबी. अगेन देन सबका फेवरेट रिलेशनल मोस्टली. अभी अपन कॉलेज में तो ओरेकल एसक्यूएल सीखेंगे, पर मैं जरूर बोलूँगा कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल भी ट्राई करो. और 3 टाइप्स है जो आगे देखेंगे. सर, तो एक ग्राफ का भी टाइप होता है, टाइप ऑफ डेटाबेस, दैट इज Neo4j. and also search, there is an elastic search database and Solr. और एक अभी 7th जो टाइप ऑफ डेटाबेस है दैट इज Fauna, and it uses GraphQL as its schema. So I think if Prajwal is present, Prajwal, you can tell if you have any idea. Please tell us about that, about this multi-model database. So currently I think everybody should research about that. और अगेन फिर इसके बाद किसी को अभी ये तो सब हो गए टाइप्स ऑफ डेटाबेस अपन देख लिए सिर्फ आज नाम. आगे के एपिसोड्स में कवर तो होंगे ही. अभी और किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया? कौन कौन से डेटाबेस और भी काफी छूटे हैं, तो कोई बता सकता है वो? Distributed. या And Hadoop. या Hadoop और किसा. तो डज एनीवन नो कि अभी करंटली डिस्कॉर्ड कौन सा डेटाबेस यूज करता है? Cassandra का? कसांड्रा करता था 2021 तक, पर अभी उन्होंने थोड़ा आई थिंक 4 टू नहीं, थोड़े ही महीने पहले अभी चेंज किया है उन्होंने एक डेटाबेस. वही चल नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वही समझते हैं अभी. तो बेसिकली अभी थोड़े ही आई थिंक थोड़े मंथ्स पहले तो हिस्ट्री देखते हैं डिस्कॉर्ड की. उन्होंने मोंगोडीबी से शुरू किया था और 2017 में उनके 10 मिलियन यूजर बेस था डिस्कॉर्ड का. फिर उनका एकदम मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से 2021 में ऑलमोस्ट 140 मिलियन यूजर बेस हो गया. फिर उन्होंने मोंगो की स्केलेबिलिटी के इशू की वजह से कसांड्रा में स्विच किया था. और उसके बाद वापस अभी देयर आर मोर देन अ ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस इन डिस्कॉर्ड राइट नाउ. तो वो सब इन सब को स्टोर करना और इन सब पे मतलब ऑपरेशंस यूज करने के लिए नाउ दिस न्यू डेटाबेस इज यूज्ड. तो इसके बारे में मैं बोलूँगा. मैं ब्लॉग और वेबसाइट की ब्लॉग और एक यूट्यूब का वीडियो है वो आपको शेयर करता हूँ, कभी ना कभी जरूर देखिएगा. तो अभी तो स्टोरी के लिए टाइम मतलब इतना ही ठीक है. सो सिद्धार्थ, बेसिकली आपको इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका प्रोजेक्ट क्या, आपको क्या चाहिए. जैसे एसिड बेस का भी हो गया है अपना एग्जांपल, राइट? तो उसमें और एक मैं बात बताना भूल गया कि अभी एसिड बेस में ही
आपको क्या लगता है एसिड कहाँ काम आएगा और बेस कहाँ काम आएगा, वो प्रॉपर्टीज उस बेसिस पे अपन टाइप डिसाइड कर सकते हैं, एज हिमांशु हैज आल्सो सेड इन राइट इन ट्रांजैक्शंस. So in financial systems like banking, accounting, in healthcare systems, in e-commerce websites, there is necessity of consistency, right? And atomicity also. There acid type of databases like acid properties are used, whereas in base मतलब base के लिए अपन क्या बोलते हैं सोशल मीडिया जैसे हो गया कि हमें कॉन्स्टेंटली अवेलेबल चाहिए कुछ भी, और लाइक यूट्यूब और ट्विच जो होता है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज करता है. सो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस कि बेसिकली हर बार अवेलेबल होना चाहिए. बेसिकली अगर वो लेट भी चाहे कंसिस्टेंट स्टेज पे पहुंचे पर मुझे ऑलवेज वो अवेलेबल चाहिए. तो ऐसे ही एसिड बेस के मतलब आपको एसिड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है या बेस प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे आप आगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस पे रिसर्च कर पाओगे, और डिपेंडिंग ऑन यू कि आपके प्रोजेक्ट को कौन सा सूट करेगा वो आप यूज कर सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है मतलब बड़े स्केल पे, और मोंगो भी काफ़ी फेमस है, आपने सुना ही होगा. मोंगो एक्चुअली नो एसक्यूएल है. So about this SQL, no SQL part and everything, we will cover in next episodes. So I think Tushar, do you want to say add anything? Yeah, no, just go on to doubts or Yeah. anything. Yeah. So this is our end of the session. So we are ready for a Q&A. Yeah. One thing to tell that database topic in the core is vast, so be sure to explore it well. Mm. Okay, guys, that was a fantastic session by Siddesh, Tushar, and So, one thing. Aradhya. How many of you guys were new for this today's session? Means first time joined a WLG community meet or miss this podcast or new to this season. Okay. So Okay, you can ask. If you have any doubt, the portal is on. You can ask any questions to the presenters. yeah, even on the thread of discussion FOSS Files, you can also ask question whenever you want. Pawan, if you have no problem, you can come onto the stage and ask question. Yeah. I will invite. Yeah. Okay, Pawan, can you tell? What doubt do you have? तो आज तो अपन ने Pawan, वैसे you are SQL. muted. Yeah. Please unmute yourself and speak. Yeah, okay then. Pawan, you can also comment. It's not an issue. Pawan, Siddharth, me, where are you guys from? Also, in the meantime, if any audience has any feedback throughout the session, means if anything should be suggested, Yeah, what then do we can also that. improve on, please tell us. Or any future topics you want. Yeah, तो इतने मतलब इतने क्या बोलते हैं डेटाबेसेस के टाइप्स तो देख लिए, आपको मोस्ट ऑफ देम पता भी थे. अगर उनके ही बारे में कोई स्पेसिफिक चाहिए या फिर किस पे सेशन देना है. ओके, मित फ्रॉम कोल्हापुर.
Okay, so Pawan's question is that uh, we had a faculty in a diploma who himself a student of Virgin College. He challenged us in internal exam that if I have a database table in SQL with 5 records with exactly same data, okay, and if I want to delete only one of those 5 records, how can I? Till that I have never found a query for that. Okay, so बेसिकली तो की तो कहीं होगा नहीं, पांचों सेम मतलब है डेटा, इसलिए पांचों एग्जैक्ट सेम फील्ड हो तो तुषार, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? 5 records, exactly same data. पहला तो मेरा या तुषार गो अहेड। मेरे को I guess एक्चुअली कैसे एसक्यूएल में इंसर्ट करने के लिए प्राइमरी की एक चाहिए होती है, तो अगर नहीं भी हो तो एक जनरेट करनी पड़ती है रो नंबर के लिए आई गेस। अगर पूरे रिकॉर्ड भले सेम हो पर फिर भी एक रो नंबर के लिए एक स्पेशल जनरेट करनी हाँ। पड़ेगी। Okay, I applied indexes to those and I successfully retrieved one record from those 5 using index but couldn't delete it. actually So delete करायचं basically नहीं तो और एक उपाय इसमें किया जा सकता है कि आई थिंक एक फील्ड बढ़ा के बेसिकली वैसे अपन आईडी की एक फील्ड ही बना सकते हैं, उन पांचों को यूनिक आईडी देंगे 1 to 5 में बेसिकली, और सिंपली डिलीट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू जो भी पर्टिकुलर आपको लाइन डिलीट करनी हो। हैव यू ट्राइड दिस पवन? आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर सिद्धार्थ। Okay, so that's the reason you don't have a unique column. Okay. If I One, मतलब while inserting same records in the SQL table, it didn't get any error. ट्राय करायचं. If possible, Pawan, can you please share your screen so that our presenter can help you? yeah. ओके, तो एक टेबल बना के और एक ये करके अपन ट्राई करते हैं। तुषार अभी कर रहा है। हाँ सुरू आहे. तुषार क्रिएट समथिंग। नवीन टिपिटा. अरे तू तू हलवत काय आहे? So let's assume only 2 type of data, like we don't want any unique data, so actually we can also use one type of data. Yeah, that's one. मार्शल टू कर. Hmm. Ask if you have any, like, if we are doing anything wrong or you have any question in that, please let us know. तो अभी करते टेबल में values.
insert into Tushar. Just a minute. Yeah. And also, Tushar, I would say after inserting, also describe the table again so that we can see whether MySQL creates like key by itself or not. वरचं Okay. कमेंट करतर Again, yeah, सारखं okay. So see the table now. तेच कॉपी कर आणि पेस्ट कर. अरे So there is only one entry. Okay. Try to सेम again insert. होतं. Okay. Okay. So we have two Tushar, right? Now we want to delete one of them. So एक बार डिस्क्राइब टेबल करना. डिस्क्राइब कमांड. No, DESC. Okay. ओके, तो की तो कोई है नहीं और नल भी एक्सेप्टेड है, डिफॉल्ट कुछ भी नहीं. ओके, तो अभी अगर अपन ये लिखेंगे तो आई थिंक दोनों डिलीट हो जाएंगे. आई वॉज थिंकिंग दैट हाँ, एक बार ये करके देखते हैं. नहीं तो एक बार अल्टर टेबल करके एक रो ऐड करेंगे खुद से ही, जिसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे आईडी को फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to whatever it will auto increment, and that will assign the value like id1 तुषार, id2 तुषार, like that. और फिर वहां से एक आईडी में से डिलीट कर पाएंगे. पवन, इज दैट So okay? I can't use the id. so आईडी भी यूज without नहीं कर. affecting any ID, let's try one thing. My database is created and it has two values, right? Yeah. So I'll just here's ना now temp लिमिट लगा तो लिमिट yeah limit, that's what Limit. I'm trying. काय होतं फील्ड काय होती नेमटी. हो गया ना.
हाँ एक बार टेबल दिखाओ। हाँ वन रोल डिलीवर राइट। हाँ Then हो गया। ओके so Pawan, have you answered your doubts? Limit command in your syllabus. Limit या means तुषार when you run a query, it limits you to the number of rows you are affecting to. yeah. So what happens in actually is that when you run that delete command, MySQL tries to calculate how many rows are getting to affected when you run that command. So when we write delete from temp where name equal to Tushar, it found all of the rows where the name equal to Tushar and it tried to delete them. But it's just set it to 1 now. So it's problem in MySQL, okay, but if you see on other databases like MongoDB, so when there are same values, same like this same values rows present, MongoDB automatically generates its unique ID, object ID, right? So when you pass that object ID, we can delete one. Even if you haven't set to create a unique ID for that, MongoDB automatically creates for the Object ID. Yes, guys, anyone has any doubt? Meet the value of limit command can be dynamic if you use PLSQL. Actually, it's a little advanced topic means programming SQL. Yeah, programming in SQL. So I guess we can conclude the session, conclude the podcast. I mean. Okay. So I think no one has a doubt now. So in this today's session, we had learned so many things about databases. What is database? What are the types of databases? And many more things like SSD. What is SSD and difference between SSD and hard disk and all. Thank you to our presenters, especially Siddesh, for coming and giving so much valuable things to the session, and especially to Char and Aradhya as well. So I think we can conclude now. And in the chat, you can have a discussion of on which topic you want the next session. And on the general channel, you can also come and you can discuss about the various other open source softwares like Linux also. We are the Linux enthusiasts, like our club name is Walchan Linux User Club. So you can come and have a discussion over there also. And if you have any doubt related to databases, you can also contact our presenters for today's session, especially Siddesh. They will be very present to help you. Like now, they had help you. So thank you everyone for joining the session. Thank you so much. So you can suggest the next database topic for our next episode. And also, when the topic is announced, gather your all questions and get ready. Yeah, questions gather करो जब topic announce होता है. And तो be एक और prepared, guys, with the podcast. सिद्धेश ने like 7 kinds of database बताया, right? Like wide column or Graph based, memory based. document based. वैसा हायर उस लेवल का चाहिए या फिर स्पेसिफिक डेटाबेस का चाहिए, ये भी बता सकते हो. जनरल डेटाबेस भी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक डेटाबेस या फिर वर्सेस चाहिए, जैसे पोस्टग्राम माइस्क्यूएल हो गया, वर्सेस चाहिए. लाइक नो एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल, जियोस्पेशियल डेटाबेस और मेम कैश, ऐसा कुछ. We are open to your requests. Okay. Of course.
कोर्सेस नहीं बट एक यूट्यूब चैनल बता दूंगा। यूट्यूब चैनल है। हाँ, और इवन वो लिंक भी मैं अभी पेस्ट करता हूँ जो आखिरी में बताया था डिस्कॉर्ड का, वो करता हूँ अभी पेस्ट। वो ब्लॉग ज़रूर पढ़ना, और ब्लॉग से अगर ब्लॉग थोड़ा टफ जाएगा समझने में, यूट्यूब का भी एक वीडियो डालता हूँ, वो भी ज़रूर देखना। तो एक्साइटमेंट भी आपकी बढ़ेगी नेक्स्ट स्कूल में। And if anyone wants to revisit this podcast, ये हमारे वालचंद बिजनेस सीजर्स ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। ओके हाँ, सिद्धेश पीपीटी तो प्रोवाइड कर सकते डिस्कॉर्डवर हैं। अपडेट करू शकतो का आपण ते काय? पीपीटी पीपीटी आणि हे हाँ, चालेल ना, करू. On the याच्यावर Linux Diary 4.0 PPTs are shared with the group if अरे you are हिमांशु there. मी म्हणतो गिटहबला टाकण्यापेक्षा डिस्कॉर्डवर एक चॅनल बनवला असता त्यात सगळे सोर्सेस टाकायचे आतापर्यंत जेवढे झाले आणि मटेरियल्स. या लाईक दरवेळेस जेवढं सेशन होईल आपले तिथल्या तिथं सांगायला रेफरन्स इथून घ्या म्हणून वगैरे बरं पडेल. हाँ, आप गिटहब पे तो मतलब देख ही सकते हो. अगर ऐसा डिस्कॉर्ड पे भी करना है तो देखते हैं.